Assalamu alaikum dear candidates. I'm Samreen Abbas and I'm going to share some special points or tips for essay writing. Essay writing is the most important topic of English language. If you are preparing yourself for any exam, any competitive exam like PMS, CSS or any type of exam, essay writing is the most important. CSS में जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं कैंडिडेट्स, उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं एसे वाले पेपर में ही फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसे लिखना मुश्किल है, एसे लिखना आसान है अगर आप रूल्स रेगुलेशंस और जो फॉर्म स्ट्रक्चर है एसे राइटिंग का उसको फॉलो करें और जो स्पेशल पॉइंट्स या टिप्स हम कहते हैं उनको फॉलो करके प्रैक्टिस की जाए। कैंडिडेट्स स्ट्रक्चर वगैरह तो सीख लेते हैं, टिप्स भी जान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ one should be a reader of history and books of general information. आपको रीडर होना चाहिए बिकॉज रीडर्स आर लीडर्स। हिस्ट्री के बुक्स हो गए और इंफॉर्मेशन के। सेकेंड टिप है द इवेंट्स ऑफ द डे शुड बी फॉलोड इन अ गुड न्यूज़पेपर। हर रोज़ आप लिखने की आदत डालें। जो भी इवेंट्स हुए दिन में वो आप लिख लें। ये भी एक टिप है, स्पेशल पॉइंट है अगर आप अपनी CSS के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऐसे राइटिंग अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। इवेंट्स लिखने से आपके आइडियाज़ डेवलप होंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। द थर्ड पॉइंट इज़ one should also cultivate habits of observation and cultivation, noting the varying aspects and processes of nature, the different phases and conditions of life in different places, the form and ways of animals and plants, human customs, feelings, actions, and pursuits. The fourth tip is by these methods, the young writer will furnish himself with sufficient ideas for the composition of plain essay on almost any type of essay on any ordinary topic. A good skeleton framework or an outline is very necessary. But before commencing to draw up an outline, devote a short time to a careful consideration of the subject of the essay. Then cross-examine yourself about it so as to draw out your ideas one after another. Such ideas should be jotted down as they occur to you. Otherwise, they may slip out of your mind and be lost beyond recall. Apart from these tips and points for essay writing, you must be good at English language. Your grammar should be good. English grammar के बाद आपकी essay writing पे प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको आप लिख लें। उससे आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगा। और ट्राई टू बी सिंपल इन स्टाइल। वर्ड्स जो आपको इस्तेमाल करने हैं अपने एसे में वो सिंपल होने चाहिए। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मोर पॉइंट्स एंड topics on essay writing which I am going to make lectures and videos on them. So inshallah I will upload onwards. If you want to learn essay writing in English language, stay tuned with me and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you can find a notification of my new videos on especially essay writing and other important topics for your benefit. Thank you.